Good evening, class. Today we are going to start a new chapter, and this chapter is totally based on the flowering plants and plant section also. Because in last video we have discussed the different types of modification of root, stem, and leaves, and also we have discussed the placentations, inflorescence, and types of inflorescence also. Okay, so next we are going to start new topic, and that is anatomy of flowering plants. Okay, so anatomy and morphological structures both are different things, because in morphology we have to study the outer structure of plants, and in anatomy we have to study the internal structure of plants. Okay, so this is the chapter number 9 from cellular book, and the same chapter is also inside of your CBSE book, and it may be, I think, 6 or 7. Okay, so most important, both the topics are generally same, there is no difference. In cellular book it is generally given in expanded form, and in CBSE it is a short form, but it is a very pure form. Okay, so we have to discuss in this chapter the internal structures of plants. So first of all we are going to discuss the definition of anatomy. Okay, what is the meaning of anatomy structure of plants? So anatomy is the branch of science which deals with the study of internal structures of any organism, whether it is plants or animals, are called anatomy. So anatomy structures here we are studying for plants also, so means the study of internal structure of plants is called anatomy. इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जो भी हम स्टडी करेंगे वो प्लांट सेक्शन में उसे हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम से जानते हैं. मोस्टली वी हैव टू स्टडी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, इसमें हम ज्यादातर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के बारे में डिस्कस करते हैं. ओके, सो before starting we are going to just discuss the outcomes of these types of anatomy structures, because in anatomy we have to study the several things inside the plant section, how the plants are generally growing, and how the cells are also performing different types of function in the flower plants. So we have to study so many things in this chapter. So before starting we are going to discuss the basic component of this chapter, and that is the cell. We know that our body is also made up of a group of smallest particles, that is called cell, and it is the structural and functional unit of life also of human beings. Now the group of cells makes tissue. So in tissue system it is the most advanced level. In plant section the tissue level is a very advanced form, and it is found as a very broad spectrum. Okay, so tissue की अगर हम बात करते हैं, so plants में tissue का सबसे ज्यादा यूज किया गया है. So mostly we are going to touch the basic components of tissue. Why? Because both cell makes tissue, tissue makes tissue system, and different types of tissue combine to form organ makes organ system, and after the organ system makes a complete organism, and that is called human beings, animals, and plants also. Okay, so most important we are going to discuss the basic components of tissue by which the total building block and supporting structures are generally performed by the action of tissue. So first of all, what we know about the tissue? So we know that टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी बहुत सारे सेल्स के ग्रुप से टिश्यू बनते हैं, एंड दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर सेम होते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, और किसी स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए ऑर्गेनाइज्ड होते हैं. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव अ कॉमन features, origin, and also they organize in a simple way to do different types of function or specific function also. टिश्यू जो होती है अलग अलग फंक्शंस भी करते हैं, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन के लिए होते हैं. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर, देयर इज अ टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू. ओके, so the first tissue is meristematic tissue, and the meristematic tissue is also called as divided or divisions tissue, and permanent tissue means they are totally fixed, and there is a little bit of variations are generally seen. There is a not any cell differentiation, we have to see that. So there is a two types of tissues are given in your NCERT book, and that is the permanent and meristematic tissue. Okay, so meristematic tissue and permanent tissue both are different, because their features, their definition, and their types is also different, and they also do lots of process in the plant section, and all the tissue provide a beneficial roles in the plant section, because
If the plants is not supported this type of tissue, it means that is not a proper functioning is generally running in the plant section. So we have to study in this chapter, and the first chapter is meristematic tissue. अब इस चैप्टर में हमको सबसे इंपॉर्टेंट meristematic tissue को देखना है. So first of all, meristematic tissue is generally came from the Greek or Latin word which means meristos. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सबसे पहले जो ग्रीक वर्ड अगर हम देखते हैं, सो इट इज जनरली ऑब्टेन्ड बाय मेरिस्टोस. मेरिस्टोस का मतलब होता है डिवाइडेड. डिवाइडेड मतलब द सेल्स आर टिश्यू विच आर कंटिन्यूसली डिवाइडिंग, जो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं. एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ एनी सेल्स. किसी भी सेल्स का, किसी भी ऑर्गन का, किसी भी बॉडी फंक्शन के लेंथ को हमेशा ये इंक्रीज करते रहते हैं. सो दैट इज कॉल्ड मेरिस्टोस. ओके, मेरिस्टोस का मतलब डिवाइडिंग टिश्यू. सो मोस्टली इट कंसिस्ट ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग. एक्टिवली डिवाइडेड का मतलब होता है जैसे हम वॉल्केनो पढ़ते हैं, डोरमेंट वॉल्केनो, स्लिप वॉल्केनो. ये कुछ वॉल्केनो ऐसे होते हैं जो एक बार ब्लास्ट होते हैं, उसके बाद उनके प्रिपरेशन में काफी समय लगता है. कुछ ऐसे वॉल्केनो होते हैं जो एक बार फूटते हैं, उसके बाद स्लीपिंग स्टेज में चले जाते हैं, फिर काफी समय बाद उठते हैं. एक ऐसे वॉल्केनो होते हैं जो एक्सटेंट होते हैं, जैसे एक बार वॉल्केनो अगर ब्रस्ट हो गया उसके बाद वो फिर कभी वॉल्केनो नहीं बनता. सो सेम ऐसे इनमें क्या होते हैं, दीज आर एक्टिवली डिवाइडिंग. ये हमेशा डिवाइड होते रहते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम इनमें जो सेल डिवीजन की जो प्रोसेस है वो हमेशा एक्टिवेट होती है, और ये अपने नंबर ऑफ सेल्स को हमेशा एक्टिवली फॉर्म में डिवाइड करते रहते हैं. जैसे कोई भी वायरस होता है तो वो किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर जब एंटर करता है तो उसके अंदर जो ग्रोथ है दैट इज ऑटोमेटिकली एक्टिव इन अ फॉर्म. वो हमेशा ग्रोथ करते रहते हैं क्योंकि वो एक्टिव फॉर्म में होते हैं. वायरस को जनरली डिजनरेट करने के लिए हमको बहुत सारे केमिकल्स, एंजाइम, हार्मोन्स वगैरह का यूज करना पड़ता है. सेवरल टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड मेडिसिन आल्सो. ठीक है. सो मेरिस्टोस का मतलब होता है इट इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स दैट आर फाउंड इन दोज रीजन. ये ऐसे रीजन में पाए जाते हैं ऑफ प्लांट बॉडी. इट मींस ओनली हमको प्लांट बॉडी के बारे में पढ़ना है. सो दोज आर फाउंड इन ओनली प्लांट बॉडी दैट शो ग्रोथ, जिनमें ग्रोथ होता है. सो प्लांट्स बॉडी में इट इज नॉट डिपेंडेंट इन एवरी पार्ट्स ऑफ प्लांट जनरली ग्रोइंग. किसी भी प्लांट का जो पौधा है वो सब तरफ से ग्रोथ करता है, लेकिन कुछ एक ऐसे रीजन्स होते हैं जो मोस्टली हाई फॉर्म में डेवलप करते हैं, और कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनका फर्दर डेवलपमेंट के बाद उनमें स्टॉप हो जाती है, उनकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है. ठीक है. चाहे हम स्टेम की बात करते हैं, चाहे लीव्स की बात करते हैं, चाहे रूट्स की बात करते हैं, चाहे फ्लावर्स की बात करते हैं. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ऐसे रीजन्स पे होते हैं जो कंटिन्यूसली ग्रोथ करते रहते हैं. एंड दैट इज फर्स्ट वन इज रूट टिप. जो सबसे पहला आता है एरिया इनका दैट इज कॉल्ड रूट टिप, यानी रूट के सबसे टॉप पार्ट में होता है. उसके बाद सूट टिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सूट टिप में भी होते हैं. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करो तो बेस ऑफ द लीव्स, जिसको हम एक्सिलरी बर्ड्स भी कहते हैं, या जनरली लीव्स के जो पीछे जो एरिया होता है जो कि एक्साइल ऑफ लीव्स भी कहते हैं हम लोग. मोस्टली बेस ऑफ द लीव्स यानी लीव्स के बेस के पास भी होते हैं, वो एरिया हमेशा ग्रोथ करते रहते हैं. सो इनकी अगर वैरायटी देखें तो इनकी वैरायटी काफी ज्यादा है हमारे नेचर में. एंड इट इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. इनका जो टाइप्स है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, जनरली इट इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. द फर्स्ट वन इज एपिकल मेरिस्टम. एपिकल का मतलब होता है जो सबसे ऊपर पार्ट में होता है, वेदर इट इज शूट सिस्टम या रूट सिस्टम में जो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट में होगा दैट इज कॉल्ड एपिकल मेरिस्टम. सेकंड उसकी बात करते हैं तो इंट्रा कैलरी. इंट्रा कैलरी में इंट्रा मतलब होता है बीच में. एंड लास्ट इज लेटरल मेरिस्टम. लेटरल मेरिस्टम का मतलब होता है सबसे डाउन पोर्शन, दैट इज कॉल्ड लेटरल मेरिस्टम. Okay, so there is a little bit of difference between these all the types of meristematic tissue, and we have to also study the different types of function. Next, we are going to discuss the next property. First property is apical meristem. What we know about the apical meristem? Okay, so apical meristem is most important part because they are present in the growing tips of stem and roots. यानी ये स्टेम के सबसे ग्रोइंग टिप यानी सबसे टॉप पार्ट में होगा, या तो ये रूट्स के सबसे टॉप पार्ट में होगा, दैट इज कॉल्ड एपिकल. एपिकल का मतलब होता है जो कि हमारे रूट सिस्टम या शूट सिस्टम के सबसे टॉप मोस्ट लेयर पे होगा, दैट इज कॉल्ड एपिकल. उसी को हम एपिकल कहते हैं. एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर फाउंड ऑन द एपिकल पोर्शन ऑफ एनी स्टेम आर शूट्स, इसीलिए हम उसको एपिकल मेरिस्टम के नाम से जानते हैं. ओके, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस टाइप्स ऑफ टिश्यू. इनके फंक्शंस क्या हैं. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट द फंक्शंस ऑफ एपिकल मेरिस्टम मींस इट हेल्प्स इन द इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ स्टेम. यानी किसी भी
स्टेम के लेंथ को या फिर किसी भी रूट के लेंथ को ये क्या करते हैं, हमेशा इंक्रीज करते हैं. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी प्लांट. नेक्स्ट, इंट्रा कैलोरी. इंट्रा कैलोरी मीन्स they lie at the base of leaves or internodes. It means that intracalary tissues are found in the base of leaves or between the internodes, यानी internodes के साथ या फिर लीव्स के बेस में पाए जाते हैं. दीज आर कॉल्ड इंट्राकैलरी टिश्यूज एंड मोस्टली इनकी फंक्शंस की बात करते हैं. सो फंक्शंस इज हेल्प इन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स में लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ होती है, उसके लिए दीज इंट्राकैलरी टिश्यूज आर जनरली रिस्पॉन्सिबल, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू लर्न द मेन फंक्शंस ऑफ दीज थ्री टाइप्स ऑफ टिश्यू कि इनका काम क्या होता है. ठीक है. नेक्स्ट we are going to discuss the last portion is lateral meristem. lateral meristem का मतलब क्या होता है? so most important अगर हम बात करते हैं, so lateral meristem में they lie on the lateral sides of the stem and roots. lateral मतलब जो सबसे लास्ट, apical means सबसे फ्रंट में, बीच में इंट्राकैलरी आते हैं और सबसे लास्ट पोर्शन की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड लेटरल मेरिस्टम. सो लेटरल मेरिस्टम टिश्यू इज आल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज these tissues generally they lie on the lateral sides of the stem and roots, यानी स्टेम और रूट्स के सबसे lateral portions पे होते हैं. और इनका सबसे इंपॉर्टेंट अगर फंक्शन देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका जो फंक्शन है, they also increase the thickness of stem and root. ये इसका फंक्शन जनरली आई हैव नॉट मेंशन बट आई एम टेलिंग यू they increase or they are responsible for increasing the thickness of stem and roots, यानी stem के और roots के thickness को increase करने के लिए lateral meristem tissues का use होता है. Okay, so next part we have to discuss some more about the apical meristem and the first meristematic tissue. Okay, so in next part we have to discuss the most important, the axillary buds. What is the meaning of axillary buds? Okay, so axillary bud means this is the bud which are generally found in the axial part of leaves and they further grow and also complete the development process. Okay, so that is the most important. These are called axillary buds. So many times the questions may be arises. So what is the meaning of axillary bud? So you have to mention the from that to that portions and that is the complete definition of axillary buds. So further axillary completes to sow and responsible for performing branches are flowers. जो axillary buds होते हैं which are present in the axial स्टेट और एक्साइल फॉर्म ऑफ लीव्स, यानी एक्साइल यानी सबसे इंटीरियर पोर्शंस पे होते हैं लीव्स के, और वो जो बर्ड होते हैं एक्सिलरी बर्ड्स वो फर्दर डेवलपमेंट करके आगे चलकर ब्रांच या फिर फ्लावर्स के फॉर्म में भी तैयार होते हैं. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एक्सिलरी बर्ड्स. नाउ नेक्स्ट we are going to discuss the most important topic and the topic is permanent tissue. After the completion of meristematic tissue we are going to study the most important permanent tissue. Okay, so what is the meaning of permanent? So permanent tissues are derived from meristematic tissue, यानी जो permanent tissue होते हैं वो meristematic tissue से ही derived होते हैं. It means that eukaryotes and prokaryotes we have studied well, but most important यूकैरियोट्स आर जनरली डिराइव्ड फ्रॉम एंड मोस्ट एडवांस्ड वर्जन ऑफ प्रोकैरियोट्स, यानी यूकैरियोट्स जो है वो प्रोकैरियोट्स से ही डिराइव्ड है और उनके काफी एडवांस्ड वर्जन है. सो इट इज नॉट एडवांस्ड वर्जन बट इट इज जनरली डिराइव्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. व्हाई? बिकॉज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जनरली shows the further development and further growth, but permanent tissues are generally lost the functions of divide. Okay, so let it discuss. The permanent tissues are derived from meristematic tissue and are composed of cells. ये किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं. and which have the loss of ability to divide. ये अपने आप को डिवाइड नहीं कर पाते, इनके पास जो कैपेसिटी होती है डिवीजन की वो जनरली इनके पास नहीं होती. so that is the also important features. Now next we are going to discuss what is the importance and what is the types of permanent tissue. so बात करते हैं टिश्यू के टाइप्स की. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरली परमानेंट टिश्यूज आर टू टाइप्स. परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं
which are divided into two types. The first is simple, and simple means वो वैसे भी सिंपल होता है, एंड कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब जो ज्यादा इंटीरियर पोर्शंस पे बेस्ड होंगे, उनके बॉडी फंक्शंस, उनके ऑर्गेनाइजेशन काफी मॉडिफाइड होंगे और उनका फंक्शन भी काफी डिफरेंट होगा. सो फर्दर types of permanent tissue is simple and complex, and further simple tissue is divided into three types. बाद में simple tissue भी तीन types में बटे हैं, and complex tissue is also divided in two types, and further इनके भी सब और divisions है. आप अगर most of the times if you will prefer the S Chand refresher of biology, definitely you will get some more variation and more types of these types of tissues. ठीक है. So let's discuss the most important part. अगर हम simple tissue की बात करते हैं, so simple tissue में these are divided into further divided into three types: parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. So these are the plant tissue. Okay, and this is the part of plant section. Parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, both the tissue, all three tissue perform different function. All three tissues are found in different organization and also creates lots of specific function inside the plant section. We will discuss one by one in a detailed manner. Next, if we are coming to the next portion, that is the complex. What is the meaning of complex? Means complex is the just critical from the simple tissue से काफी criticals होते हैं. बात करते हैं तो xylem and phloem is the further division of complex. So most important, don't forget, permanent tissue is divided into only two types: simple and complex. Simple tissue is further divided into three types: parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. And next, most important, complex tissue is also divided into two types: xylem and phloem. So that is the most important part, which so many times the questions may be asked on the basis of xylem and phloem, because xylem और phloem के बाद अगर हम देखेंगे further, so xylem is also divided into four types and phloem is also. xylem के बाद हम इसमें xylem में we have to study tracheates, we have to study vessels, we have to study xylem parenchyma, and we have to study xylem fibers. बहुत सारे इनके भी versions हमको पढ़ने हैं. So first we are going to discuss the initial stage of parenchyma. हमें parenchyma के बारे में देखेंगे. In next video we will discuss some more properties of these types of tissue. So first, parenchyma means the walled cells. Walled cells means these are the protecting cells, यानी walled type के होते हैं, which intracellular space, ये walled type के होते हैं लेकिन इनके बीच में intracellular space है. Intracellular space मतलब space between the two types of cells, that is called intracellular. मतलब दो cells के बीच में जो space होगा उसको हम intracellular space कहते हैं. And cell wall is made up of cellulose. Mostly plant cell में जो cell wall होते हैं, it is made up of cellulose. ठीक है. एंड इट परफॉर्म्स द फंक्शन. इसके फंक्शंस क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू हैव टू लर्न द डिफरेंट फंक्शन ऑफ डिफरेंट टिश्यूज. आपको सारे टिश्यू के अलग अलग फंक्शन को मेंशन करना है. सो फर्स्ट, परमानेंट टिश्यू का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट हेल्प्स और इट कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करता है. सेकंड, अगर हम बात करते हैं, इट आल्सो कंप्लीट द स्टोरेज प्रोसेस. स्टोरेज मतलब बहुत सारी चीजों का स्टोरेज होता है. इट मे बी स्टोरेज ऑफ सेलुलोज, इट मे बी स्टोरेज ऑफ फ्रूट्स, मटेरियल्स एंड डिफरेंट थिंग. बहुत सारी चीजें इसके अंदर स्टोर हो सकती है. नेक्स्ट, it is also used as secretion. Secretions का मतलब होता है which things can be emitted from their body parts or plant section. मतलब अपने body parts से, चाहे plant section की बात कर रहे हैं, किसी चीज को बाहर निकालना है. ठीक है. So that is all about the photosynthesis, storage and secretion. These are the three important topic which parenchyma completes in the plant section. And parenchyma is the part of simple tissue, and simple tissue is the part of permanent tissue, and permanent tissue is a part of plant tissue. Okay, so this is all about the today class, and today I have only give you the basic concept, and the concept is that you have to understand all the tissue by their definition and their function also, because most of the times these types of tissues may be asked in your board exams, in oral exams, and also this is a very important for exam purpose also in your future. Okay, so this is all about the introduction part of anatomy structure of flowering plants. In next video we will discuss collenchyma, sclerenchyma, complex में xylem and phloem. We will complete all the topics. Okay, thank you students.